Welcome to PTL Computer Institute, and as you know, I am Mukti, the faculty of PTL Computer Center. And today, the agenda is, if you remember, last lecture we left with the terms of CPU. So we'll continue with that. So let's jump into that. The first component is ALU, that is arithmetic logic unit. If you remember, we draw one diagram. With that we specified all the components. Okay, so we'll write one by one components and their uses. So ALU stands for arithmetic logic units. So what is the use of that? So like, what is responsible of ALU? It is responsible to perform all the arithmetic and logical operations, right? All the arithmetic and logical operations माने जितने सारा दर सीपीयू किछु गोटे रिक्वेस्ट पाइला arithmetic operation बा तम logical operation सब करियो के एलयू करियो. ओके फाइन. तो arithmetic operations कौन कौन? The arithmetic operations like what are those? Plus, minus, multiplication, division and modular division. These are the arithmetic operations के करियो तमरो ALU करियो. Apart from that, what are the logical operations? Logical operations are operations like, what are those? Logical operations के अच्छे जो less than equals to, greater than equals to, what next? Equal, not equal. These are the logical operations. Okay. In short, what we can say? In short, all the arithmetic and comparison operations are performed by whom? By the ALU. Clear? तो ALU कौन जी हमर कौन करे सब तक arithmetic आउ logical operation करिवो से हमर ALU. ताले केतल से करिवो से जिंस जेते बेले मोर कोन हो किछु उटे रिक्वेस्ट आसिला आ से रिक्वेस्ट का रिगार्डिंग अछि. The request is regarding to the arithmetic or logical. से कि जानियो केन ताले के जणवा ताकू control unit. The next component is control unit. सरला ये next control unit. Component 2, control unit or CU. Control unit. Okay, control unit. So control unit काम कौन? Control unit is responsible to handle or to control the entire operations performed inside the computer. Computer भीतर जितने सारा ऑपरेशन सब हो जे हैंडल के करियो control unit. Okay, so control unit, it is responsible
Okay? It is responsible for responsible for controlling data transfer and and instruction okay and instruction among other units 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 or components of computer माने कौन मोर जो कंट्रोल यूनिट अच्छे से कौन करिवो जो डाटा ट्रांसफर होउची ता का उत्तर अदर कंपोनेंट्स डाटा ट्रांसफर हो कि इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर हो कि तमरो किसी ऑपरेशन हो तो सब तो हैंडल के करियो कंट्रोल के करियो तमरो कंट्रोल यूनिट करियो ओके व्हाट नेक्स्ट व्हाट एल्स इट विल डू it is also known as it is also it is also known as central nerve system nerve central nerve system of computer okay central nerve system of computer because as it manages manages all the operations and it manages and coordinate all the and it manages all the components NENTS of computer ओके जैसे कौन करुच्ची सब तो कंपोनेंट को मैनेज करुच्ची आ कोऑर्डिनेट करुच्ची तो मान पे ताको हितवे कौन कह जाए सेंट्रल नर्व सिस्टम क्लियर ओके जैसे सब किछि हैंडल करुच्ची कंपोनेंट्स हैंडल करबा डाटा फ्लो हैंडल करबा देन तमर कोन डाटा ट्रांसफर करबा ओके एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन करबा सब तो करुच्ची के कंट्रोल यूनिट धर कि ओटे मोर अरिथमेटिक ऑपरेशन आसिला के करिवो ताको क्या पठेबो टू द एलयू पठला पर एलयू जाई जानिबो ये को टाइप ऑपरेशन अछि तापर ताको से कोन करियो ऑपरेट करिवो तो से जिंस सब का थ्रू पॉसिबल होजी थ्रू द कंट्रोल यूनिट्स क्लियर नेक्स्ट आउट जिंस लेट्स मोड रिक्वेस्ट पठले काल जो कहउतली मु a + b करछि तो a b कोन वेरिएबल्स ताल वेरिएबल माने कोन गोटे लोकेशन जो मोर कोन अछि किछि वैल्यू अछि राइट ताल इट कोन करिवो से लोकेशन जो मोर वैल्यू अछि से वैल्यू को के रीड करिवो CU करिवो कंट्रोल यूनिट माने लेट्स मोर एटा गोटे मेमोरी ए मेमोरी तर मोर कोन अछि गोटे a अछि आ गोटे b अछि a रे वैल्यू लेट्स से 2 अछि b रे वैल्यू लेट्स से 5 अछि ओके तो कंट्रोल यूनिट कौन करिवो जो मो a को रिट्राइव करिवो तार वैल्यू कौन अछि 2 then what is the value of b 5 then 2 plus 5 will send to whom to the ALU then only ALU will going to perform the operations once ALU done with the operations it will return what return the result as 7 and that 7 will be again updated let's say it is c is there so it will be updated in the variable c what is the value 7 then the C will be transferred to whom to the peripheral device the output device के हमर monitor तो ए मेमोरी रू कोन कोन कर ट्रांस डाटा जीव कोठी की तमर मॉनिटर को जो तम देखिबो टीवी 7 बोली शो करेबो ए जो ट्रांसफर भी होज के करेबो एटी कंट्रोल यूनिट्स ओके ता माने कोन डाटा फेच देन सेंडिंग टू द पेरिफेरल डिवाइस सब काम के करियो तमर कंट्रोल यूनिट्स देन कोन कहबे हमें कंट्रोल यूनिट इज आल्सो रेस्पोंसिबल
responsible to fetch the data as well as communicate with peripherals. Peripherals. Peripherals माने कौन? Input output device जा कहते IO device. IO devices. तो एमान सहित के इंटरैक्ट करिवो तमरा कंट्रोल यूनिट करिवो. क्लियर? CU control unit is also responsible to fetch the data, okay, as well as communicate with whom? With the peripheral devices. Clear? माने ये जो डाटा को अपडेट करला जावा इंस्ट्रक्शन आसी इंस्ट्रक्शन अपडेट करला देन ता पठेला का को एलयू पाखबो देन एलयू तो रीड करला ऑपरेशन परफॉर्म करला रिजल्ट पठेला तो रिजल्ट पठेला कोडी कंट्रोल यूनिट रो सेठी काम से कोन करबो स्टोर को रिजल्ट ने कोडी इनटू द मेमोरी तो स्टोर हे गला देन से कोन करबो पठेबो रिजल्ट कोठी टू द आउटपुट डिवाइस दैट इज 7. क्लियर? नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट. क्लियर? ओके. नेक्स्ट चैप्टर रजिस्टर. एक्सेलेंट. नोट डाउन हो गला रजिस्टर. व्हाट इज रजिस्टर? रजिस्टर कौन? रजिस्टर कौन? सत्य. व्हाट इज रजिस्टर? डाटा केते रखियो? वेरी गुड. रजिस्टर. ओके. व्हाट इज रजिस्टर? ओके. रजिस्टर इज नथिंग बट ए सिंपली ए स्टोरेज. ओके. जे कोन करिवो जो इंटरमीडिएट ऑपरेशन होच. ओके. इंटरमीडिएट रिजल्ट जो गुडा को ताको स्टोर की करिवो के तमरो रजिस्टर. मैक्सिमम रजिस्टर केते स्टोर कर पारो 1 वर्ड. गोटे वर्ड जे केते बाइट? 2 बाइट्स. ओके. मैक्सिमम one register can able to store 1 word unit of data. ओके. तो कौन कर पारे हम रजिस्टर? रजिस्टर सिंपली स्टोरेज. it is just it is a storage built on top of small high speed circuit. Built on top of small high speed circuit. Small high speed circuit गोटे बहुत स्पीड रे गोटे सर्किट ऊपर से बनाई छि कोन तमरो रजिस्टर बनाई छि. तो से कौन कर पारियो? it will store the intermediate operation result. ओके. माने जो इंटरमीडिएट ऑपरेशन हो लेट्स से मोर कोन अछि a plus b it will be multiply with let's say c. So according to the mathematics formula first the bracket of operation will perform. That means a plus b will happen. First a plus b होबो जहां रिजल्ट लेट्स असला z then z will be multiply with c. ये जो z जो रिजल्ट असला एटा कोड स्टोर हो तमरो गोटे रजिस्टर रो स्टोर. एटा कोन कोन तमरो इंटरमीडिएट ऑपरेशन हला रजिस्टर तुम से स्टोर करियो. देन फाइनल रिजल्ट जब हला लेट्स से q हला ए q टा पठाबो कोठी की टू द मेमोरी एंड देन टू द आउटपुट डिवाइस डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हला. जदि मोर रिक्वायरमेंट मेमोरी स्टोर होबो ताल मेमोरी भी जीवो. जदि मोर रिक्वायरमेंट नाही मेमोरी स्टोर होबार नाही ताल कोठी जीवो टू द आउटपुट स्क्रीन दैट इज मॉनिटर हला. क्लियर? तो ये जो रिजल्ट रखियो केते स्टोर कर पारियो? रजिस्टर will store
max of one word that is equals to 2 byte of data. ओके मैक्सिमम गोटे वर्ड से कौन कर पारिबो डाटा उसे स्टोर कर पारिबो क्लियर ओके क्लियर देन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ यूजेस जो टाइप रो जो रजिस्टर हम यूज होची ता हिसाब रे कौन करा छै हमर मल्टीपल टाइप रजिस्टर को डिफाइन करा छै ओके देन टाइप्स ऑफ रजिस्टर केते रजिस्टर अछि बहुत माने कौन कौन in general there are 6 types of registers we have. सौ प्रकार अधिका भी अच्छे ओके बट नॉर्मली डिपेंड अपॉन द टाइम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम टाइप तुम रजिस्टर कौन हो अधिका भी हो ओके बट इन जनरल आम 6टा बोल 6 भाग में डिवाइड कर रजिस्टर को कौन कौन से सब नंबर 1 जनरल पर्पस रजिस्टर जनरल पर्पस register then the purpose then pointer register segment register segment register then index register okay index register then what next instruction pointer register last one instruction pointer register so these are the 6 different types of register we have okay तो को टाइप रे कोन काम को रजिस्टर कोन काम एटा वाला तम टैक्स यू नीड टू कम अप विथ दैट टैक्स तो काली तमरो ए जो टैक्स गुडा दछि को रजिस्टर कोन काम एला एटा वाला तम ड्यूटी तम ताको लिखि आनियो हला जे न होला ता पर हम डिस्कस करिया नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट कंपोनेंट नेक्स्ट इज द बसेस नेक्स्ट इज बसेस And what is boss? What is boss? Boss कौन? Yeah. Okay. In general, जनरली जो डाटा वाला स्टोर हुए वो टाइप का स्टोर हुए इन टर्म्स ऑफ बाइट्स गोटे बाइट जे केते बिट 8 बिट्स ता माने इच 8टा बिट कंबाइन हेरे कि गोटे बाइट डाटा से माने स्टोर करि पारिबे ता माने मोर जो डाटा स्टोर होउची इन टर्म्स ऑफ बाइट्स माने 8 बिट और ईच बिट विल रिप्रेजेंट द सिंगल 0 और 1 काइंड ऑफ थिंग्स तो मैक्सिमम कोन हो गोटे बिट गोटे 0 और 1 को से रिप्रेजेंट कला ताले मोर जो बसेसटा कोन हो combination of 8 wires okay each wire will responsible to transfer at least single bit gote wire transfer hobo combine तंत्र कोड द्वारा कोन के हम गोटे सिंगल बस कहबा combination of 8 wires means at a time 8 by 8 bit रो data transfer hobo using the buses
Okay, like in general, data is transferred in terms of data transport in terms of bytes, that is 8 bits. Okay, and each bit is responsible, each bit each bit will contains either 0 or 1, either 0 dharibo nole 1 rakhibo. Okay, next, that means a single bit is transferred a single bit is transferred in one wire, and a combination of 8 wire, combinations of 8 wire is known as bus, known as a bus. Okay, 8टा तार को मिसई देली जोटा हला एटा हम कोन कहबी गोटे बस कहबी. तो बस कोन यूज करा होता है to transfer the data between multiple components भितर मु डाटा ट्रांसफर करबा पई कोन यूज करबी buses. Okay, that means buses is used to transfer data between buses is used to transfer data between multiple components. Okay, multiple components भितर data transfer करबा पई कोन यूज करी मु बस यूज करी. देन बस कते प्रकार रो 3 प्रकार कोन कोन. Then buses are of 3 types. What are those? Number 1, data bus. Address bus and what else? Control bus or signal bus. Control bus. Okay, data bus kama kono, it is used to transfer the data. Likewise, address bus used to transfer the memory address, and control bus is used to transfer the control signals. Okay, so in short, it is used to transfer sorry guys, transfer the what data, used to transfer the data between transfer the data, that's it. Okay, transfer करे माने multiple components transfer करियो. Okay, likewise, used to transfer what? Memory address. Likewise, what about control? Used to transfer
control signals, control signals. Clear? Okay. What else? Clear? Next, clock. Okay, clock कौन? Clock कौन? तो मोर किसी गोटे काम करूची, ओके, माने सीपीयू जो अछि प्रोसेसर जो अछि ताको कोन दिया जो टास्क दिया जो गोटे टाइम कोन गोटे टास्क दिया कि मल्टीपल टास्क दिया हो। जो मल्टीपल टास्क जो देले से मल्टीपल टास्क को केते बेले को टास्क को केते टाइम पर करिवो से जो टाइम दिया जीवो सेटा कोन हिसाब दिया जीवो ऑन टर्म्स ऑफ क्लॉक पल्स। ओके, गोटे क्लॉक हिसाब ता कोन दिया जो एती क्लॉक साइकिल मु देबी टू परफॉर्म टास्क 1 टास्क 2 पई 3 मिनिट लेट्स से और एमती टास्क की आछि एटा मोरला क्यू हला धाडी जो कहउछ। ओके, तो टास्क 1 T1 T2 T3 T4 चारटा टास्क मते आछि। ओके, तो এই जो टास्क नबो केते समय लेट्स से मैक्सिमम मोर नबो ये 5 क्लॉक साइकिल्स CLS लेट्स से एटा 7 एटा 2 एटा 1। ओके, तो कौन करिवो या सब मल्टीपल एल्गोरिथम्स अछि जो एल्गोरिथम यूज करी हम कोन करिया सीपीयू अलोकेट करिवा टू परफॉर्म द टास्क। ओके, से एल्गोरिथम जदि हम यूज करिया पहले कोन करिवो जोडा अछि कोन राउंड रॉबिन एल्गोरिथम सेंदी कोन अछि तमरो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम मान जे फर्स्ट आसला से फर्स्ट काम करी दिवो लास्ट इन फर्स्ट और लास्ट जे आसीबो फर्स्ट काम करिवो आ कोन अछि प्रायोरिटी माने सब जरा हाई प्रायोरिटी थिबो से काम करिवो। नेक्स्ट कोन अछि स्मॉलेस्ट जॉब फर्स्ट सब जे कम दा टाइम दरकार थिबो सेटे से काम करिवो हला। तो आमे से लाइन भितर बेसी जीवन नेबे एल्गोरिथम कोन ता यूज कोन केते बड़ एल्गोरिथम अछि से डिटेल हम पढिबानी किंतु एती जानि थाओ ए जो जॉब गुडा हम एलोकेट करिया काम करिया पे सीपीयू टाइम दबो से कोटे को हिसाब दबो ए इन द क्लॉक साइकिल बा क्लॉक पल्स बा क्लॉक बुझेला। तो जदि फ्यूचर केबे के कोन बीटेक की एमसीए वगैरह करला सेतबेलु से पढिबो कोन एल्गोरिथम शेड्यूलिंग ता कोन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कोनते ओ एल्गोरिथम यूज करेगी तमरो गुटे सीपीयू बा गुटे प्रोसेसर को एलोकेट हो टास्क ओ टास्क से फास्ट करिवो होला। तो से भितर हम जीवानी जति जानि तो कोन से काम करिया पे कोन यूज करते हमें क्लॉक यूज करते। ओके, राइट, नेक्स्ट तो क्लॉक कोन clock is a unit which is used to allocate a number of clock times to perform a specific micro operation। micro operation माने कोन गोटे ऑपरेशन लो छोटो पार्ट छोटो यूनिट का कोन कहया गोटे माइक्रो ऑपरेशन लगो। it is a unit used to okay used to measure and allocates okay measure and allocates a fixed time slot a fixed time slot okay a fixed time slot for processing each micro operation हेलो गोटे माइक्रो ऑपरेशन कोन माइक्रो ऑपरेशन इज नथिंग बट माइक्रो ऑपरेशन इज a small unit smallest functional operation can say is smallest functional operation माने गोटे मोर ऑपरेशन अछि ताकू मु मल्टीपल छोट छोट पार्ट रे मु डिवाइड करली आ ईच छोट पार्ट मु कोन कहबो गोटे माइक्रो ऑपरेशन
Okay, micro operations. So in simple term कौन कोई करेंगे? Each to perform a task, to perform a micro operation, perform a micro operation. CPU is allocated with a fixed number of clocks. A number of clock, a fixed number of clock. Okay, fixed number of clock pulse. Fixed number of clock pulse. Clear? And the speed of CPU is measured in terms of what? Megahertz. MHz. Okay, that कौन दी? Megahertz. Megahertz. Okay, or millions of cycle per second, or millions of cycle per second. And the clock and the speed of CPU is varies depending upon the version of CPU. Varies depending upon the version of system. Okay, system रो version नहीं कौन करिवो ये vary करिवो CPU रो speed गुड़ा सब. बुझियला? Clear? With this we completed the different components of CPU. Okay, and I hope all the components clear to you. If you guys having any kind of doubts or concern, so don't hesitate to comment and we'll happy to solve. Thanks for watching the channel. Thank you.